Please start reading the question. The Indian Constitution has borrowed the idea of suspension of fundamental rights during an emergency from the Constitution of which country? So the Indian Constitution has borrowed the suspension of Fundamental fundamental rights. rights. ये कहाँ दिया हुआ है? और कहाँ से इंस्पायर हुआ, USSR. कहाँ से कॉपी मारी? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। व्हाट आर द 4 ऑप्शंस Option गिवन? 4, I think. USSR. तो जर्मनी से लिया अपन। our answer is Germany. Germany, Okay. there was a system called Weimar Constitution. Okay. Suspension of fundamental rights during emergency. Suspension Okay. of fundamental rights during emergency. So from where we have taken the emergency provisions, कौन से fundamental rights suspend Germany. नहीं होते? आर्टिकल 2021 आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते। और कौन से आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल से अपने इमरजेंसी के? नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो जर्मनी में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज देयर इन जर्मनी? कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है जर्मनी का? हेलो, प्लीज रीड द chats and tell me. Weimar Constitution, suspension of fundamental rights during emergency. ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ये अपना आंसर है। द अदर ऑप्शंस क्या क्या है? ब्रिटेन, यूएसएसआर, आयरलैंड। सो आयरलैंड से क्या लिए? आयरलैंड से 4-5 चीजें लिए अपन। कौन से लिए? DPSC, nomination of members to Rajya Sabha, method of election of president. सो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए अपन? फ्रॉम व्हाट वी हैव borrowed from the Ireland constitution? DPSC, nomination of members to Rajya Sabha, method of election of president. Method of election of president. Then you have what a third option? ब्रिटेन, ब्रिटेन से सबसे पहली चीज जो याद लिखना, रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले क्या लिए? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ। देन यू हैव parliamentary form of government. Then we have taken the concept of single citizenship. Office of Prime Minister. Concept of collective responsibility. So what did you take from Britain? Rule of law, parliament, parliamentary form of form of government. government, single citizenship,
Office of PM, concept of collective responsibility. कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? USSR, यूएसएसआर। यूएसएसआर, व्हाट इज यूएसएसआर? यूएसएसआर का फॉर्म क्या था? So what did we take from USSR? fundamental duties, idea of social, economic, and political justice. In our preamble. In our, when you read the preamble, you will find this. Okay, so सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन से कंट्री से लिए? जर्मनी। डीपीएसपी कौन से कहां से लिए? Ireland, और ब्रिटेन से क्या क्या लिए? rule of law, parliamentary form of government, the single citizenship, office of PM, concept of collective responsibility. यूएसएसआर से क्या क्या लिए? Fundamental duties, ideal of social, economic, and political justice in our preamble. इन आवर प्रियम्बल। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम में आता है। ओके, सो नेक्स्ट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A candidate for office of the President of India must be proposed and seconded by dash. तो अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए ठहरना है तो आपको कितने एमपी सपोर्ट करना? पहले आपका नाम At पहले least. प्रपोज करना, कितने? पहले 50, फिर उसके बाद में Okay. आपके साथ कौन आना, और 50 सेकंड माने जो सेकंड आते। Okay. सो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर प्रेसिडेंट के लिए ठहरना है तो कितने इलेक्टर्स रहना? 50. 50. 50। व्हाट इज द इलेक्टर्स? इलेक्टर्स का मतलब क्या है? जो वोट डालने वाले हैं। Yes. ठीक है? और जो सेकेंडर्स माने जो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। ठीक है, सो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। आए तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो 50-50 याद रख लो। 50-50, 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉलेज क्वेश्चन, ये पहले पढ़ा दिया था आपको। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट पूछा ऑन, सो प्लीज रीड द कॉम्बिनेशन। Dr. B.R. Ambedkar, President of Constituent Assembly. So who was the president G.V. of Constituent Assembly? President of Constituent Assembly is was Dr. Ambedkar. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. B.R. Ambedkar was President of Constituent Assembly. Rajendra Prasad. chairman of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. Okay. तो पहला जो दिया हुआ है, the very first thing it has been given, this is wrong, this should be this, and
president of Constituent Assembly should be this. इधर इंटरचेंज कर दिया और who is the first speaker of Lok Sabha? We have seen in the last sessions. ये करेक्ट है. जीवी मलकाई. जीवी मवलांकर. जीवी Okay. मवलांकर. Mavlankar. And this is also wrong. Dr. Sachidanand Sinha was the first temporary president of Constituent Assembly. Dr. Sachidanand first temporary speaker, temporary president of Constituent Assembly. माने he was the eldest. So एक दिन के वास्ते इनको बिठाए ऊपर. उसके बाद में after Dr. Rajendra Prasad became permanent. Okay. So पहला क्या है? Dr. B.R. Ambedkar was chairman of drafting committee. Permanent president of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. Dr. Sachidanand Sinha was not the first leader of opposition. It was the first temporary president of Constituent Assembly. The only correct answer is, so who is the first speaker of Lok Sabha? जीवी मवलांकर. ठीक है, डन. This all will read in our notes. ये notes में पूरा बहुत ही क्लियर कर दिया हुआ है. पढ़ रहे notes? टाइम मिल रहा? How many of you are going through the notes? Okay. So done. Clear a point here? So who was the Dr. B.R. Ambedkar? chairman of drafting committee. Chairman of drafting committee. ये कैसा भी आता था अभी अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन कैसा भी आता. Next, please read. Cheating a, cheating a person with the help of computer resources is punished with imprisonment under the Information Technology Act 2000. अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स करके आपको चीट करा तो उसको कितनी सजा है? कितने 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 साल अंदर रहता हूं मैं? कितने साल? 3 साल की सजा है. चीटिंग विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम के लिए कितना है? चीटिंग अगर करे तो 3 years. कितने साल के अंदर? 3 years. ठीक है. एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, it is also known as cyber law. Information technology act is also known as cyber law. Next, The golden triangle in Indian Constitution consists of. तो golden triangle बोलते थे. So what is Article 14? Everyone is equal before law. Equality before law. Article 14 is equality before
Equal it before law. What is Article 20? Protection in respect of conviction of for offense. Protection in respect of conviction for offences. What is Article 21? Protection of life and personal liberty. What is Article 19? Protection of certain rights regarding freedom of speech. तो चारों में से एक 3 आर्टिकल्स को मिला के क्या बोलते हैं आप? गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गोल्डन ट्रायंगल। सो कौन से आर्टिकल्स को मिला के बोलते हैं आप? आर्टिकल नंबर 14, 19, आर्टिकल नंबर 14, 14, 19, 20. 19 एंड 21। तो तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? कौन से ट्रायंगल बोलेंगे? Golden triangle. गोल्डन ट्रायंगल। 14, 19 एंड 21। ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये? इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जस्ट दीस आर ऑल फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। The reservation for economically weaker section provides under the Indian Constitution is 15%. कितना परसेंटेज है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए? 10%. 10% रिजर्वेशन है। 10%. 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और कौन से उसमें आया ये? विच अमेंडमेंट वाज ब्रॉट बाय? और कौन सा अमेंडमेंट है? EWS and economically weaker section. अमेंडमेंट कौन सा So what is अमेंडमेंट से आ रहा economically weaker section? है? गरीबान है। गरीबान Okay. जहाँ जो क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते, सोशल एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं। जो फॉरवर्ड कास्ट के रहते लेकिन गरीबान है, पैसे नहीं कमाए, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन लाए। उन लोगों के लिए क्या लाए? Okay. रिजर्वेशन लाए। Reservation. What the? Article 42 says. नहीं होता। $78 how much? तो दिख रहा स्क्रीन? Article 41. विच अमेंडमेंट? Third amendment, sir. 103rd amendment. 103rd अमेंडमेंट। Third amendment. कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 10%. 10%। कौन से साल में आया ये? 2019। और कहाँ, कौन से उसमें दे रही है? इन एजुकेशनल An एंड additional institution and government jobs. एजुकेशनल Government एंड jobs. गवर्नमेंट जॉब्स। तो क्या याद रखना है आपको? Government. ईडब्ल्यूएस कब आया और कौन से साल में ईयर आया? में आया, कौन से अमेंडमेंट आया? कितना किस परसेंट साल में रिजर्वेशन आया है और और कौन किस से डोमेन्स में दे रहे? तो याद रखे तो काफी है।
सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कितना परसेंटेज दे रहे रिजर्वेशन? 10% रिजर्वेशन। कौन से अमेंडमेंट से आया ये? 103 सर। 103 कौन से साल में आया? 2019। 2019। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जी सर। Okay, now tell me this. Please read the question. Article 19 clause 1 clause A of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression to all the citizens of India. राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको दिए तो पूरे लोग आके फिर खा जाते हैं गवर्नमेंट की। फंडामेंटल राइट्स क्या है उसमें क्लासिफिकेशन है। सम राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल, सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू citizens of India, some rights are available to both citizens as well as foreigners। तो ये जो 19 clause 1 clause A है, it deals with the freedom of speech and expression। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, किसकी गवर्नमेंट है? कौन बनाए गवर्नमेंट को? इंडियन सी बनाए। तो उससे किसको मिलता है हक? All, all citizens of India. पूरे सिटीजन्स को मिलता, फॉरेनर्स को नहीं मिलता। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। फॉरेनर्स को राइट टू स्पीच नहीं है, आना अपना काम करना चले आना। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। 18 ईयर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड एवरीथिंग। और 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑटोमेटिकली किसको राइट्स मिल दे रहा? All citizens of India. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सो 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए इज अवेलेबल टू विच टाइप ऑफ पीपल? Citizens of India. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन। In which of the following cases has the Supreme Court of India decided that reservations should not exceed 15%, 50%? Which of the following cases, in which of the following case, what is the Supreme Court said? Reservations should not exceed 50%. Reservation should not exceed 50%. So it is said in the case of Indira Sahni versus Union of India. Indira Sahni versus Union of India। ये रिजर्वेशन केस भी बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मंडल केस। याद है नहीं है, भूल गए? डू यू रिमेम्बर और नॉट? Division नहीं हो रहा सर। नहीं तो कैसा? मंडल केस, मेनका गांधी केस, पूरे ये चलते रहता ना। सो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सेकंड रुको। जी सर। सो इंदिरा साहनी केस को इज ऑल्सो नोन एज
मंडल केस। मंडल केस। ठीक है। और यस सर। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, 1990s में आया सो ये। ठीक है, तो और व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? चंपकम दोराई दोराई राजन राजन। वी ये वर्सेस कब आया? स्टेट ऑफ मद्रास। 1951 का केस है ये। सो कब आया ये? 1951। 1951। इसमें अगर इसका टॉपिक क्या है बोले तो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। सो चंपाकन दोराई केस वाज, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। डीपीएसपी। ठीक है, और एक चीज अगर पूछ लिया था उन्हें, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस इन इंडिया। सो क्यों हुआ था केस बोले तो क्या बोलते हैं आप? Caste based reservation in India. कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस इंडिया नहीं दे सकते बोल के सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इट लेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो अगर पूछ लिया पूछ के भाई ऐसा कौन सा केस था जिसको जिसकी वजह से पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो कौन से केस की वजह से सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? सर ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया ये किसका है? ये चंपाकन दोराई केस में, चंपाकन दोराई का केस है ये। उसमें मेडिकल सीट्स, ओके। एक कॉलेज था, कॉलेज में मेडिकल सीट्स के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जैसा अपना फॉर एग्जांपल शेख है, सैयद है। ओके। ठीक है, हायर कास्ट फॉरवर्ड कास्ट, हिंदुओं में भी राव, उन लोगों का हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है। कास्ट ओके। बेस्ड रिजर्वेशन गवर्नमेंट लाई थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ वो। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ये इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। फिर उसके बाद में फिर उसको पलटने के वास्ते फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। सो कब आया था ये कास्ट बेस्ड ओके। रिजर्वेशन? 1951. 1951। सेकंड केस क्या है? Jacob Matthew versus State of Kerala. जेकब केस, जेकब मैथ्यू केस बोलते हैं इसको। जेकब मैथ्यू केस कब आया ये? जेकब मैथ्यू केस 2005 में आया। इसका क्या है 2005? ये किससे रिलेटेड है? मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड। क्या है टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इतना याद रखो। जो जेकब मैथ्यू केस कब आया? 2005। 2005. 2005। It's related to medical negligence case under Article 304 of IPC. 304 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। Okay. आर चित्रलेखा केस, चित्रलेखा केस कब आया? आर चित्रलेखा केस 1964। आर चित्रलेखा केस कब आया? 1964. 1964। और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? रिजर्वेशन ही था, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है, समझ में आ रहा?
तो चंपाकन दोहराई रेजन केस कब आया? 2005 19 कब आया? 1951। जेकब 51 मैथ्यू केस कब आया? 2005 आर चित्रलेखा केस कब आया? 1964. 1964. 1964। और इंदिरा साहनी केस कब आया? 1992।